Welcome back to English Education. Today's topic is transition words and phrases. स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कौन कौन से ट्रांजिशन वर्ड्स और फ्रेजेस यूज कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन इज सीक्वेंस. अगेन, ऑल्सो, and then, besides, finally, first, second or third, furthermore, last, moreover, next, still, too. So next condition is time. First one is after a bit, at last, after a few days, at length, after a while, at that time, afterward, before, as long as, earlier, as soon as, immediately, in the meantime, साइमल्टेनियसली. इसका मतलब होता है एट द सेम टाइम. मतलब कि जब हमने किसी चीज़ को बताना होता है कि कोई भी चीज़ है जो इस टाइम हैपन हुई हो और इन एट द सेम टाइम वही चीज़ हैपन हो. मतलब कि कोई भी चीज़ हमें बतानी हो जो कि हो एट द सेम टाइम, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली. Done. In the past, lately, later, meanwhile, now, presently, shortly, since, so far, soon, then, thereafter, until, or when. So next condition is comparison. अगर हमने दो चीज़ों में comparison करना हो. Again, also, in the same way, likewise, once more, or similarly. Another one is contrast. जब हमने किसी दो चीज़ों में कंट्रास्ट करना हो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो. ओके, तो फर्स्ट वन इज ऑल्दो, बट, डिस्पाइट, इवन दो, हाउएवर, इन कंट्रास्ट, इन स्पाइट ऑफ, रिगार्डलेस, स्टिल, इंस्टेड, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, on the contrary, on the one hand, on the other hand, though, yet. Next है examples. After all, even, for example, for instance, indeed, in fact, of course, specifically, such as, the following example to illustrate. Next one is cause and effect. जब हमने किसी चीज़ का रिजल्ट बताना हो, मतलब कि ओके, as a result, accordingly, because, consequently, therefore, does, for this purpose, hence, so, then, thereupon, to the end. Next condition is place. जब हमने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हो जो कि किसी पोजीशन को या किसी जगह को रेफर करते हो. ओके, फर्स्ट वन इज अबव, adjacent to, below, beyond, closer to, elsewhere,
there, to the left, far, further on, here, near, nearby, opposite to the right. ये सभी जो फ्रेजेस और ट्रांजिशन वर्ड्स है, ये सभी हमें कहाँ यूज़ करने हैं? वैसे तो हम स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, राइटिंग में मोस्टली ये सभी वर्ड्स टास्क 1 में यूज़ हो गए। टास्क 1 में जब हमने मैप को डिस्क्राइब करना होता है, तब हम ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कंसेशन। Although it is true that, granted that, I admit that, it may appear that, naturally, of course. Next one is summary, repetition और conclusion। टास्क 1 में या टास्क 2 में जब हमने कंक्लूजन लिखना होता है या फिर समरी लिखनी है, उसमें कौन कौन से यूज होंगे? ओके, एज अ रिजल्ट, एज हैज बीन नोटेड, एज आई हैव सेड, एज वी हैव सीन, एज मेंशन्ड अर्लियर, इन एनी इवेंट, इन कंक्लूजन, इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट, on the whole, therefore, to summarize. Okay, so here is the end of our topic. Thank you for watching.